Welcome aspirants, welcome to Sriram IAS. My name is Saurabh. Into this series of for UPSC Mains 2025 in which we are discussing one previous year question, one topic in a day. So today is the turn of geography and we are going to discuss a question which was there in Mains 2024, a 10 marker 150 words question which was about the phenomena of cloud burst. So the question is, what is the phenomena of cloudburst? Explain. In mains, you are supposed to write concise answers, you are supposed to write innovative answers, contemporary answers, and answers in which you have substantiated your line of argument. That is the most important thing. When you combine all of it, the beautiful answers come out of your pen. In this case, remember, they are asking you to write in 150 words. 150 words are what? Around, if you write around 10 words a line, it is around only 15 lines. So in 15 lines, they are asking you to write a answer which have all these elements which I have just described to you. Now, in this case, they are asking cloudburst. Cloudburst के बारे में पूछ रहे हैं. Exact operative word है what और phenomena of cloudburst का topic है. They are not asking why. They are not asking how. These operative words are not there. Operative word here is what and explain. So how would you proceed with this answer, provided you know कि cloudburst क्या होता है? You will proceed obviously with a short definition. This is one way of going with the answer. You can describe the phenomena of cloudburst initially in your initial introductory passage. Here you can begin with a definition which is being given by the Indian Meteorological Department, IMD, that short duration, locally concentrated or localized events of heavy rainfall. Short duration, high intensity, localized events of rainfall, जहां पे जो बारिश है, जो rainfall है, it is more than 100 mm within 24 hours. So IMD कहता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपसे कहेगा कि 100 mm विद इन 24 आवर्स जब बारिश होती है, जो कि लोकलाइज्ड हो, 20 to 30 किलोमीटर एरिया में हो, इंटेंस हो, उसको हम बोलते हैं क्लाउड बस्ट. दिस इज द क्लाउड बस्ट. नाउ दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. इस इनिशियल आपका पैराग्राफ इससे होगा. This is how you can start your answer, because remember, this is not 250 word answer where the time and paper, the resources, these two important resources are on your own side. In this case, you have to write the answer in what? 4 minutes or 5 minutes max. 150 words में लिखना है, तो you don't have time to describe the situation of that particular issue in so many lines. आपको सिर्फ basic description दे देना है जो आपसे सवाल पूछा गया है. And then you will describe what? The mechanism of cloudburst. क्योंकि आपसे क्या पूछ रहे हैं? What? उन्होंने क्या पूछा है? What is the phenomena? So you will go with the mechanism of cloudburst. कैसे cloudburst होता है? तो localized जो rainfall हो रहा है 100 mm per 24 hours, जो कि काफी intense है. If you have read or studied and prepared these issues in detail, you will know that this is the case, a classic case of what we call orographic rainfall. This is the type. There are many types of rainfall like convectional rainfall, etc. But here the orographic rainfall is the key factor. Mostly in hilly areas, hilly terrain, that is why this phenomena takes place. What is orographic rainfall? In which the moist laden warm air is suddenly, when it is passing by, it will met a mountain or a hill, it will ascend. When it will ascend, immediately it will lose the temperature, and because of the temperature loss, it will cool down, the water vapor in it will condense, and there will be rainfall. उसको हम बोलते हैं orographic rain. तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है, हिमालयन रीजन्स में है. 2023 में हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बस्ट हुआ था, सिक्किम में 2022 में हुआ था, 2010 में लेह में हुआ था, 2013
Kedarnath cloud burst is very famous, so you can substantiate also with that. दूसरा जो मैकेनिज्म है इसका, वो होता है जब एयर मास, पर्टिकुलरली वार्म एयर मास एंड कूल एयर मास collide with each other, in which the warm air mass will be totally lifted and there will be rainfall. That is also there. Low pressure conditions when they develop, they also create issues. लो प्रेशर जोन अगर हिमालयन रीजन में बनते हैं, जैसे लेह में बने थे 2010 में, there was a cloud burst situation, because when the low pressure conditions will be developed, the air, the wind will move to fill that area, और वहां पे cloud burst होने की संभावना बन जाती है. दैट इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट रीजन क्लाउड बस्ट का. इसके अलावा यू विल ऑल्सो टॉक अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड दैट इज क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो एन इशू which is impacting the cloud burst. Because of climate change, more and more the frequency, intensity of the cloud burst episodes are increasing. ये factors mostly होते हैं जो फिनोमेना है क्लाउड बस्ट का, ऐसे आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. इंटेंस रेनफॉल बहुत छोटे से एरिया में हो रहा है. तो नाउ यू विल डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द क्लाउड बस्ट. इमीडिएटली यू कैन टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ द क्लाउड बस्ट एज वेल. आपसे सिर्फ लेकिन वो फिनोमेना उन्होंने पूछा है. फिनोमेना क्या है? दिस इज द बॉडी, मेन बॉडी ऑफ द आंसर, द मैकेनिज्म. बट इन द नेक्स्ट पैरा यू विल स्टार्ट विद डिस्क्राइबिंग. थोड़ा सा इफेक्ट भी आप डिस्क्राइब करेंगे. उसमें आप क्या बात करेंगे? जब क्लाउड बस्ट होता है तो क्या होता है? लैंडस्लाइड्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं, फ्लैश फ्लड्स होते हैं, जैसे केदारनाथ में हुआ था. Landslides the most common thing. Flash floods is the most immediate thing which happens after the cloud burst. उसके अलावा सबसिडेंस होता है लैंड का बहुत जगहों पे, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट होती है इसकी. तो ये सारे जो इफेक्ट हैं वो आपको दिखाई देते हैं जो मैकेनिज्म से जुड़े हुए हैं. जैसे ही आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, द नेक्स्ट पैरा यू विल डिस्क्राइब और एसोसिएट this particular effect with these, and you can substantiate with one example as well. Now by the time you are done with the definition, the initial para, the introduction, the main body and the effect part briefly, क्योंकि 150 words का आंसर है, उसके बाद आपको इसको कंक्लूड करना है. Conclusion is not the summary of your answer. Most of the aspirants, they do this mistake that they, in conclusion, they write the summary. No, you don't have to write the summary. Just you have to write briefly how you can suggest that how we can deal with this crisis better. How can you could you deal with this crisis in a better, more efficient way? तो उसके लिए आप सीधे बात करते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ विषय है, वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स. तो NDMA, National Disaster Management Authority, also talks about these early warning systems in dealing with cloud burst. तो अर्ली वार्निंग सिस्टम की हम बात कर सकते हैं, बेटर प्रिपेयर्डनेस की हम बात कर सकते हैं. इफ यू आर प्रिपेयर्ड बेटर, द एडमिनिस्ट्रेशन, all the organs of the state, civil society, if they are prepared better, we can deal with the aftermath of the cloud burst in a more effective way. उसके अलावा प्रिपेयर्डनेस के अलावा आप क्या लिख सकते हो? You can talk about obviously addressing the vulnerability. मोस्टली ये जो हिली एरियाज हैं या ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं जहां क्लाउड बस्ट की सिचुएशन होती है, वहां क्या इश्यूज आ रहे हैं कि ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट बीइंग डिजाइन कीपिंग इन माइंड दीज डिजास्टर्स. तीसरा, अर्बन गवर्नेंस के इश्यूज हैं वहां पे, क्योंकि जब इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं तो इमीडिएटली जो रिस्पॉन्स रिलीफ मेजर्स होते हैं, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर लैकिंग. तो यहां पे आप ये चीजें लिखेंगे. थ्रू दिस वी कैन इफेक्टिवली address the associated consequences with the cloudburst. This is how you will end the answer. तो most of the aspirants, where they get the issue, क्यों उनकी problems होती हैं? Because when you know too much, you try to write too much. You don't have to write too much. आपको सिर्फ 150 वर्ड्स में जो आपसे सवाल पूछा गया है उसको अच्छे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड वे में सारे जो एसोसिएटेड इश्यूज हैं उसको कवर कर देना है, और एक अच्छा सा कंक्लूजन यहाँ पे आपको लिख देना है जो कि थोड़ा
suggestive style में हूँ, which provides some hint that you know about how to deal with these issues. This is a complete answer that you will have. Otherwise, you can write a full 500 words answer also on Cloudburst, 1000 word answer also on Cloudburst, 250 words answer also on Cloudburst. But they are not asking you to write in these many words. वो चाहते हैं कि आप कंसाइसली इस आंसर को लिखें. आपके पास टाइम की कमी है, आपके पास स्पेस की कमी है. सो 1.5 पेज, जनरली 2 पेज होते हैं 10 मार्कर के लिए मेंस में. तो 1.5 जनरली शुड बी द टारगेट. इफ यू आर राइटिंग 8 or 9 words a line, 1.5 में हो जाना चाहिए. और जिसमें आप ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको लिखते हैं ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड वे में. तो एक इजी ये क्वेश्चन था जो कि न्यूज में था, इस वजह से उन्होंने पूछा था. हालांकि वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट डिजास्टर मैनेजमेंट. This is also a critical aspect that you have to keep in mind. This question has been asked in GS पेपर 1 ज्योग्राफी. तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखना है. डिजास्टर मैनेजमेंट का आपने सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा झलकी दिखाई है. यू हैव सिंपली गिवन द सोल्यूशन. बट ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको इसमें आंसर राइटिंग करनी है. दैट वाज a very good question, but again the general problem lies in the word limit. तो उसको ध्यान में रखते हुए अच्छा आंसर एक क्राफ्ट किया जा सकता है. I'll meet you again obviously with a new topic in next week when the turns come up, and keep writing for preparing for the mains 2025. The more you practice, the better you will be. There is no best answer for any question. आप बेस्ट आंसर लिखने के इंतजार में many aspirants they do this mistake that they don't practice hard. So just practice hard. Try to encompass all the important details the questioner is putting forward to you, and it will be done जब आप इसको कंप्लीट करते हो. थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम.